Hello students. Last lecture I explained you meaning and features of statutory corporations. Now today's lecture I am going to explain you merits of statutory corporation. All of you see your textbook page number is 99. Now last lecture I already explained you meaning of statutory corporations. All of you know statutory corporation is autonomous corporate body. It is created by a special act of the parliament. Okay, it means they have their separate act. All of you know कि statutory corporations is initially financed and initially owned by the government, but after that RBI, State Bank of India, LIC, Food Corporation of India. These are the examples of the statutory corporations. And after formation, then they have to manage the business. Then government will not interfere and no politicians will interfere. Now let us start merits one by one. Initiative and flexibility. Operations and management of a statutory corporation is done independently without any government interference with its own initiative and flexibility. It means when statutory corporation, take an example of LIC, life insurance policy. So when it is formed by the initially formed by the government, but after that government will not interfere. अगर उन लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाना हो, न्यू पॉलिसी क्रिएट करना हो, then the LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस विल टेक द इनिशिएटिव. वो खुद इनिशिएटिव लेंगे. द गवर्नमेंट विल नॉट टेक इनिशिएटिव. एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? चेंज एज पर द सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया है. अगर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया में उन लोगों को अगर नया पॉलिसी लॉन्च करना हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आस्क द गवर्नमेंट. दे कैन immediately launch a new policy. That means government will not interfere. No politicians will interfere. Then they have to handle independently of the business. That is known as initiative and flexibility. Flexibility का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब क्या है? टू चेंज एज पर द सिचुएशन. अगर ये पॉलिसी नहीं चल रही तो दे विल फॉर और लॉन्च अनदर पॉलिसी. सो एज पर द सिचुएशन दे कैन change their policy. It is known as the flexibility. What about administrative autonomy? A statutory corporation is able to manage its affairs and independence and flexibility. Right now I have told you कि गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर. गवर्नमेंट और नो पॉलिटिशियंस विल इंटरफेयर. इसका मतलब है कुछ भी अगर मैनेज करना हो बिजनेस, कुछ चेंज करना हो तो गवर्नमेंट्स को पूछने की ज़रूरत नहीं है. दे विल टेक देयर ओन डिसीजंस. हु? Statutory corporation. For example, RBI. So RBI will take decisions independently. SBI. So SBI will take decisions independently. So that is known as a administrative autonomy. Autonomy का मतलब है independent. क्विक डिसीजंस. अभी देखो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर उन लोगों को कुछ पॉलिसी चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल रेलवे, पोस्ट ऑफिस, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इजीली हम लोग हमारा काम क्लियर नहीं कर सकते. दैट इज़ नोन एज रेड टेपिटिज्म. इट इज़ डिले टू डू द वर्क. लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में आरबीआई है, एसबीआई है, उन लोगों का खुद का एक्ट रहता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आस्क गवर्नमेंट. दैट इज़ वाई easily they can take decisions and very less file work is required. अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत है तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं लगती है. इट रिक्वायर अ लेस वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटी. लेस फॉर्मेलिटी का मतलब है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन टेक अ डिसीजन, यू कैन कंप्लीट योर वर्क. इट इज़ क्लियर? Efficiency staff. See, I think in features I told you
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज़ है हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर रियल गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन हु आर वर्किंग इन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। फॉर एग्जांपल आरबीआई में आरबीआई के एम्प्लॉयज़ है, स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ है, एलआईसी के एम्प्लॉयमेंट्स है, तो ओ दीज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। उनको हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं बोल सकते, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगर वहाँ पे काम करना हो, अगर आपको एलआईसी में जॉब करना हो या आरबीआई में काम करना हो, तो इमीडिएटली हम लोगों को जॉब नहीं मिलते हैं। वी हैव टू अटेंड द एग्जाम्स एंड द these employees are recruited by the efficient staff. Actually, the board of directors who is nominated by the government, they are really very talented, they are really very efficient, they are very knowledgeable. जो board of directors रहते हैं statutory corporations के, they are very talented. So after the examinations, अगर आपको एल में काम करना हो तो आपको एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करना पड़ती है. सो आफ्टर द एग्ज़ाम्स उस we can join in statutory corporation. So those employees are working in statutory corporations, they are efficient, they are qualified and they are well knowledgeable. Is clear? Efficient का मतलब है ज़्यादा काम करना, कि वो they can capable, they can capable to work in statutory corporations. Professional management. Board of directors of statutory corporations consist of business experts and the representatives of various groups such as labor, consumers who are nominated by the government. जो गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, मोस्टली दे आर द वेल एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड एंड इट इज़ नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. और पहले से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो लेबर कमेटी या कंज्यूमर्स कमेटी में काम करते हैं. उनके पास बहुत सारा नॉलेज रहता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है एंड दे आर रियली प्रोफेशनल्स. उनके पास उसका नॉलेज रहते हैं. सो ऐसे नहीं है कि पॉलिटिशियंस के प्रेशर से वो लोग अपॉइंट किया है कि किसी का मीन्स गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, ऐसे नहीं है. दोज हु आर वर्किंग एज इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, दे आर रियली प्रोफेशनल, वेल एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड. ओके, they were mostly they are well experienced. It is very important. And last but not least, easy to raise capital. See, initially जब ये statutory corporations form होता है, it is initially capitalized by the government. लेकिन after that, government will not provide the finance. After that, corporation has fully owned by the government, but they can easily raise capital by floating the bond. They are selling their bond to the public, and after that they collecting the कैपिटल बाय द पब्लिक. जैसे जॉइंट कंपनी का क्या है, दे हैव टू कलेक्ट कैपिटल बाय सेलिंग द शेयर्स और बाय सेलिंग द डिबेंचर्स. वैसे ही स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आल्सो कलेक्ट कैपिटल बाय द पब्लिक बट बाय सेलिंग द बॉन्ड्स. लेकिन उनका एक नाम रहता है, उनका रेपुटेशंस रहता है, इसीलिए पब्लिक उनके ऊपर ट्रस्ट करता है एंड इजीली दे परचेज द बॉन्ड of the statutory corporations, and statutory corporations collect capital by selling the bonds. So these are the merits of the statutory corporation. Next lectures I am going to explain the demerits of statutory corporations.